Okay, good morning. Last class we talked about the loss of biodiversity, or you can say that cause of biodiversity loss. Yes, sir. Cause of biodiversity loss. यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे. We were discussing about the cause of biodiversity loss. Yesterday you was absent. Very good. After a long time. अभी यूपी का क्या भी है? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट. और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वाज डिस्कसिंग देयर आर टू पार्ट. फर्स्ट वन इज natural cause and second one is man-made cause. और then there are 4 points. First one is habitat destruction and fragmentation, over exploitations, reproduction, introduction of alien species, or coexistence. There are 4 causes. There are 4 causes of biodiversity loss. Okay, so write down one by one. I think it complete, huh? 2 points. 2 points. That is over. Write down. Next, over exploitation. Next part, over exploitation. Exploitation. Over exploitation. Over exploitation of natural resources and species. Of natural resources and species. Natural resources and species. Then this is the biodiversity or biodiversity conserve chapter name. ठीक है? Man-made cause. These are all are man-made cause. Write down. Write down. Example: overfishing, over harvesting, overfishing, over harvesting of forest product, of forest product, and over hunting. And over hunting. These are the reasons of over exploitation. Okay, next one is introduction of alien species. Next heading, introduction of alien species. Introduction of alien species.
Yeah, you can say that invasion. Write down. Alien species are those which are alien species are those which are alien species are those which are purposely or accidentally purposely or accidentally introduced in an ecosystem. Accidentally introduced in an ecosystem. They become invasive. They become invasive. And they can wipe, WIPE, they can wipe out native species. They can wipe out native species. Native species. ठीक है, अब देखिए इसका मीन क्या हुआ. मीन ये हुआ कि कोई फॉरेन स्पेसीज आकर के रहने लग गई. आफ्टर सम डेज, वो पहले तो रहेगी बिल्कुल कॉमन इकोसिस्टम के अंदर. आफ्टर सम डेज वो जो एक्चुअल स्पेसीज हैं उनको ईट करना स्टार्ट कर देगी. अब ईट करना स्टार्ट किया तो जो एग्जैक्ट आपका बायोडाइवर्सिटी था उसको लॉस हो गया. अब सपोज इट, एक आपका ग्रुप है, 10 फ्रेंड का ग्रुप है, उसके अंदर एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसको स्मोकिंग पसंद हो. वो धीरे धीरे वो सबको उसी आदत के अंदर डाल देगा. ठीक है, वो उसी आदत के अंदर उस बच्चे को डाल देगा, पूरे ग्रुप को. तो वो और वही दोस्त जो जिसको स्मोकिंग है करने की आदत है, वो किसी अदर इंस्टीट्यूट से आया था. तो आप लोग के लिए क्या हो गया, वो फॉरेन हो गया. लेकिन जो एग्जैक्ट जब बायोडाइवर्सिटी थी आपके फ्रेंड्स की वो डैमेज हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए. अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश आर एलियन या इन्वेसिव. एलियन ऑब्लिक इन्वेसिव. and are threat to Indian catfish and are threat to Indian catfish. एक्वेरियम के अंदर डिफर काइंड ऑफ फिशेस हैं आपके पास, है ना, वो उनका बायोडाइवर्स एरिया हो गया. अब वहां कोई ऐसे फिश होता है ना कि आप इसके अंदर ये नहीं डाल सकते. आप एक्वेरियम लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप इसके अंदर ये नहीं डाल सकते. कोई एक फिश ऐसी आएगी वो सबको खा जाएगी. हाँ, कॉम्प्लेक्स. राइट डाउन. एंड वाटर HYACHINTH hycin CINTH was introduced for beautification in India. Was introduced for
was introduced for beautification in India, but now it an invasive species. It an invasive species. वाटर हाइसिंथ कैसा है? वैसे तो अट्रैक्टिव है, बट इसको आप किसी अदर स्पीसीज, अदर बायोडाइवर्सिटी में नहीं डाल सकते। ये उस पर अटैक करेगा और उसको डैमेज कर देगा, किसी अनदर प्लांट को। नेक्स्ट वन इज को एग्जिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट। Coexistence. This is the last point of biodiversity laws. During coexistence, write down, during coexistence, extinction, during coexistence, comma, extinction of one species leads to extinction of other species which are closely related to them. Example, a parasite fish may become extinct with the extinction of the host species. Extinction of host species. ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है। एक आपका कोई लेक है, पॉन्ड है, यहाँ मॉस्किटोस आर प्रेजेंट। Mosquitoes are present. This is the parasitic biodiversity, है ना? These are insects, ये parasites. अब यहाँ कोई एक फिश आ गई, this is Gambusia fish. Gambusia. अब ये गैम्बूसिया क्या करेगी? ये इन सब मच्छर को खा जाएगी। आपने क्या किया, इसके को एग्जिस्टेंस के लिए इनको डैमेज कर दिया आप लोगों ने। भाई इसको एग्जिस्ट करा रहे थे आप, आपको पता चला ये एक्सटिंक्ट हो गई, कम रह गई, यानी आप लोग यू कैन से दैट कि इनकी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हो गई। तो आपको क्या था, इनके नंबरिंग बढ़ानी गैम्बूसिया की। तो गैम्बूसिया को इंक्रीज करने के लिए यहां जितने मॉस्किटो थे सबको खा लिया गया। बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी किसकी थी? मॉस्किटोज की। बट इसके एग्जिस्टेंस के लिए आपने सब मच्छर को खा लिया। दिस इज कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ पॉलिनेशन या पोलिनेटर्स। डेथ ऑफ pollinators due to overuse of pesticides cause the death of plant. अब
अब जैसे एक बात और समझे, ये आपका क्रॉप है, ये क्रॉप है, तो ये बायोडाइवर्सिटी किसकी है? प्लांट्स की। अब यहाँ पैरासाइट आ गए, पैरासाइट आ गए सर। उन पैरासाइट ने क्या किया? प्लांट्स को डैमेज कर दिया। तो पैरासाइट इनके एग्जिस्टेंस की वजह से कौन डैमेज हो गए? प्लांट्स हो गए। अभी कुछ दिन पहले ग्रास रूपर का एग्जांपल आया था कि ग्रास रूपर जिस क्रॉप में से निकल गए वो डैमेज हो गई। तो ग्रास रूपर के एग्जिस्टेंस की वजह से प्लांट का एग्जिस्टेंस चला गया। तो एक स्पीसीज का एग्जिस्टेंस अगर आपको इंक्रीज करना है तो जो जो जहां जिस स्पीसीज में कर रहे हो वो खत्म हो जाती है। दैट इज को एग्जिस्टेंस। आपने एक बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए दूसरी बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर दिया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ को एग्जिस्टेंस। क्या? वेरी गुड। बट दिस इज द, हाँ यू कैन से दैट coexistence of it, coexistence. Then now let's start a most important thing, that is biodiversity conservation. The next chapter, that is biodiversity conservation. Write down heading, next chapter and most important chapter. न्यूट्रिशन साइकिल हो गया सर, देखो पहले हो गया, आपको मैंने सारी साइकिल्स आपको नोट कराई है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, biodiversity conservation. What is biodiversity conservation? We can say that a conservation of that place in which conservation of plants, animals and microorganism. This is biodiversity conservation. There are two types. First one is in situ and second one is ex situ. So we can write, first one is in situ conservation and second one is ex situ conservation. In situ or ex situ conservation. ठीक है सर। अच्छा, इन दोनों को अगर सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं, इन सीटू मीन्स जो नेचुरल हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट जैसे नेचुरल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिफियर, दीज आर द नेचुरल पार्ट, वो इन सिटू हो गया। और आप जैसे दिल्ली में आपका मन हुआ कि आपको एक जू क्रिएट करना है, आपको एक बॉटनिकल गार्डन क्रिएट करना है, तो आपने क्या किया? वहां बायोडाइवर्सिटी नहीं थी, लेकिन आपने बायोडाइवर्सिटी को
अरेंज किया, मैनेज किया, दैट इज एक्स टू। बताइए कोई डाउट हो तो। क्लियर है ना? मीन्स वी कैन से दैट इन situ you can write protect natural habitat, protect natural habitat, protected, you can say that natural habitat, mean of in situ, that is natural biodiversity, diversity, mean of ex situ mean artificial biodiversity, in situ or ex situ, artificial, protected natural habitat or protected artificial habitat, protected artificial habitat, protected artificial habitat, then sir, so example of natural habitat, write down natural park, sanctuary, biodiverse, wildlife sanctuary, natural park, biodiverse, wildlife sanctuary, tiger reserve, tiger reserve, you can write elephant reserve, national park, national park, write down in XC2. We can divide into three parts of XC2. On the behalf of technology, on the behalf of community, on the behalf of organization. Technology, community, and organization. Technology, community, and organization. Organization, write down. Organization just like a botanical park, write down botanical garden या park, zoological garden, botanical garden, zoological garden, और aquarium, aquarium, कम्युनिटी, एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए हो, जैसे गार्डन आपके और हमारे लिए, गार्डन, पार्क,
राइट डाउन गार्डन, पार्क, टेक्नोलॉजी, जीन बैंक, सीड बैंक, सीड बैंक, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन एग्जाम्पल है जैसे जो स्टेम सेल को प्रिजर्व कर रहे हैं। यू नो अबाउट स्टेम सेल? वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा, यू नो सर, सर लास्ट वन। we can generate any type of organ. Yeah, sir, you know about? चलिए in 2009, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बायोटेक में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। 2009 there was a Japanese scientist Yamanaka, ठीक है, जैसे discovered a stem cell is a powerful cell. How can we say that? Powerful means generate, regenerate या generate differ kind of organ. अब सपोज इट, मेरा हाथ कट गया, मैंने अपनी स्टेम सेल को प्रिजर्व करा रखा है, मैंने फोन किया जहां मैंने प्रिजर्व करा है, प्रिजर्वेशन के टोटल 14 हेडक्वार्टर्स हैं। ब्लड बैंक, जैसे ब्लड बैंक होते हैं ना, ऐसे ही स्टेम सेल के बैंक है, स्टेम सेल बैंक बोला जाता है उन्हें। वो क्या करते हैं, मेरी या वो किसी की भी स्टेम सेल हो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। बट स्टेम सेल 3 कंडीशन में मिलती है। ड्यूरिंग बर्थ, मेरे फादर ने अगर बर्थ टाइम मेरी स्टेम सेल को प्रिजर्व कराया होगा तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और स्टेम सेल एक ऐसी सेल है, आप समझे सर, आप कितनी सेल में थे जब आप पैदा हुए? मिलियन, लेकिन जनरेट तो एक ही सेल से हुए हैं आप। ओवम और स्पर्म मिला तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो एक ही तो सेल जनरेट हुई ना, और उस एक सेल से हम लोग, तो उस एक सेल के अंदर दैट इज नोन एज अ सिंगल सेल, दैट इज नोन एज टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मींस द सेल कैन डिवाइड इनटू मिलियन ऑफ सेल, दैट इज द नेचर ऑफ टोटीपोटेंट। तो उसी एक सेल से तो हम लोग बने हैं, उस एक सेल से ही बने हैं हम लोग, दैट इज द नेचर ऑफ टोटीपोटेंट ऑफ सेल। अब ऐसी कंडीशन किसके अंदर है? स्टेम सेल के अंदर है। जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे तो उसमें से छोटा सा एम्ब्रियो का पार्ट निकाल लो, दैट इज स्टेम सेल। ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी प्लेसेंटा को कट किया जाता है, उस प्लेसेंटा के अंदर स्टेम सेल होती है, वहां से स्टेम सेल को उठाया और स्टेम सेल का जो बैंक है उसके अंदर प्रिजर्व कर दिया। इन फ्यूचर बच्चे का लीवर डैमेज हो गया, तो उसकी स्टेम सेल से नया लीवर जनरेट किया जा सकता है। बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया, उसकी स्टेम सेल से नया ब्रेन डैमेज, लेकिन जिसकी स्टेम सेल होगी उसी का ऑर्गन जनरेट करेगी। ये नहीं है कि मेरी स्टेम सेल है वो किसी का भी ऑर्गन जनरेट करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये टेक्निक है, और इसको जहां प्रिजर्व किया जाता है ना स्टेम सेल को, उस स्टेम सेल के प्रिजर्वेशन को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। दीज आर द टेक्नोलॉजीज। एंड ये आर्टिफिशियल है सब, ये आपके नेचुरल है।
ठीक है, जब बायोटेक होगा डिस्कशन तो उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग को स्टेम सेल एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज, so write down some basics point. Write down in situ conservation. Write down a new heading, in situ conservation. आर्टिफिशियली तो हम जनरेट कर रहे हैं ना, तो उनके बारे में नहीं डिस्कस करना है यहाँ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इन सिटू कंजर। इन सिटू कंजर्वेशन क्या बताया मैंने अभी? नेचुरल। ठीक है, वेरी गुड। राइट डाउन, इट रेफर्स टू टेक्निक्स, it refers to techniques for protecting all living things, all living things in their natural settings, in their natural settings, especially endangered species. The decreasing order, इसी में कंटिन्यू करो, the decreasing order of protection in the following type of in situ conservation, the decreasing order of the following type, या in the following type in situ conservation, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कहाँ होते हैं? दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, नेशनल पार्क, देन दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट डाउन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड वन इज रिजर्व फॉरेस्ट, and fourth one is protected forest, reserve forest, and fourth one is protected forest. But firstly we will discuss about biodiversphere, after that national park, after that wildlife sanctuary, and after that reserve forest and protected forest. And write down biodiversphere. Yes, sir. Biodiversphere. 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 Write down largest या biggest conservation of biodiversity, biggest conservation of biodiversity. Started in 1971 by UNESCO, by UNESCO. But in India,
फर्स्ट बायोडाइवर्सफियर, यानी BSR लिख दिया सर मैंने, ठीक है, BSR इन 1986। ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सफियर इन इंडिया, यानी फर्स्ट BSR, लास्ट BSR, total BSR in India. Sir, these are the most important for your PT. ठीक है, फर्स्ट the total BSR in India 18. First BSR in 1986, Nilgiri. Nilgiri. You know about Nilgiri? Nilgiri उससे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है यहाँ, है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, यू नो अबाउट। और सबसे लास्ट अभी तक जो लेटेस्ट और लास्ट वो 2011 में बनना है, उसके बाद इंडिया में कोई बायोडाइवर्सफियर नहीं है। पन्ना MP, पन्ना MP। पन्ना MP, राइट डाउन। लार्जेस्ट BSR 18, लार्जेस्ट BSR गुजरात रन ऑफ कच्छ या ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात, गुजरात लार्जेस्ट BSR। 1245 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका, 454। This is the area of largest biodiverse in India. Next one is smallest BSR, smallest BSR, Dibru Dikoba, Assam, असम। इसका एरिया है 765 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। ठीक है, इंडिया है 18 बायोस्फीयर, but in UNESCO list only 12 biosphere. Write down. In India 18 BSR, but in UNESCO list only 12 BSR include. UNESCO design a list that known as MAB, 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 Man and Biosphere. जो यूनेस्को की लिस्ट है सर, यूनेस्को लिस्ट known as MAB,
man and biosphere, man and biosphere. ठीक है, अब बायोस्फीयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया. देयर आर 3 जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. राइट डाउन. देयर आर 3 जोन. फर्स्ट वन इज कोर जोन, देन बफर जोन, देन ट्रांजिशन जोन. कोर जोन, buffer zone, and transition zone. There are 3 parts: buffer zone, core zone and transition zone. देखो इस पार्ट को ऐसे समझ लो सर. There are 3 zones. This is core zone, in which no human activity. There is no human activity. अब जू है, जू के अंदर तो आप लोग जाते हो, वहां तो ह्यूमन एक्टिविटी है. देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी. एंड सेकेंड वन इज बफर जोन, limited activity, just like grazing, some kind of huh yeah, yeah, you can say that, some time of activities, some kind of activities, yeah, limited activities. And last one is transition zone, जैसे क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग. ठीक है. सेकेंड जोन इज बफर जोन. Limited activities. Limited activities. Third one is, write down, transition zone. Transition zone is outer most zone of BSR, outermost zone of BSR, where you can say that transition zone is cooperate zone, cooperate zone, कॉर्पोरेट जोन. जितना भी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हैं वो सब कंसीडर है सर. ठीक है. यू कैन से दैट परमिशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, वेयर परमिशन ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज ट्रांजिशन जोन या बफर जोन. ठीक है. चलो एक छोटा सा पार्ट और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे सर. देखो बायोडाइवर्सफियर, यस, जस्ट वन सेकेंड. बायोडाइवर्सफियर अब इसके अंदर क्लियर हो जाएगा. देन सेकेंड इज नेशनल पार्क,
and third is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. We have 18 biodiverse, 106 national park, and 567 wildlife sanctuary. Write down. Biodiverse means everything protected. Everything protected. Example, write down. Example, land, water, air, living organism, all one. Biodiverse means you can say the total biodiversity. Total biodiversity. Total biodiversity. There is no commercial activity. Write down. There is no commercial activity. Total biodiversity means living and non-living. Living plus non-living. And biodiversity, biodiverse यानी BSR controlled by government. ठीक है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. अब इन नेशनल पार्क देखो यहां क्या था, लिविंग प्लस नॉन लिविंग. आपका आंसर है बताइए जो आपने क्वेश्चन किया था अभी. लिविंग और नॉन लिविंग को आपको अगर कंजर्व करना है तो एक ही पार्ट है आपके सामने, BSR बस. नेशनल पार्क मींस कि आप सिर्फ लिविंग को कंजर्व करेंगे और उस लिविंग से रिलेटेड जितना भी फ्लोरा और फुना होगा. सपोज इट आप एक टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं तो टाइगर के लिए डियर भी होना चाहिए वहां, तो आपको डियर को कंजर्व करना पड़ेगा. उस डियर को कंजर्व करने के लिए आपको वहां पर फॉरेस्ट करना पड़ेगा, ग्रासेस होनी चाहिए वहां पर, तभी तो होगा. तो उससे रिलेट जितना भी वेजिटेशन है उसको कंजर्व करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर उसके लिए. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ एक स्पीसीज के लिए. आपने अभी क्या किया, टाइगर को कंजर्व करने के लिए आपने डियर को कंजर्व किया, डियर को कंजर्व करने के लिए उससे रिलेटेड जितना भी वेजिटेशन है उसको कंजर्व किया. तो वो एक रिलेशन है, वो दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्क. और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज. सो राइट डाउन इन नेशनल पार्क. ये बिल्कुल मैं एक स्मॉल पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है. दिस इज इकोसिस्टम कंजर्वेशन एक्टिविटी नेशनल पार्क. दिस इज, आगे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. बायोडाइवर्सिटी यहीं तक है, आगे नेशनल पार्क. इकोसिस्टम कंजर्वेशन एक्टिविटी which controlled by Indian government. Next point, in which no commercial activities are allowed. In which no commercial activities are allowed. No commercial activities
in national park with a living organism या with a organism we protect with a living organism we protect vegetation bracket flora and fauna bracket flora and fauna and in wildlife sanctuary write down in wildlife sanctuary we protect a particular species that area in which we protect a particular species their commercial activities are allowed वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को WLS लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एजेंसीज दिस इज एनिमल कंजर्वेशन देखना सर एक बार बिल्कुल एक स्मॉल डिस्कशन है बस देखना आप यहां क्या कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग मींस यू कैन कंजर्व एनवायरमेंट कंजर्वेशन यू कैन कंजर्व एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आप यहां उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेट जितना भी वेजिटेशन है चाहे वो फ्लोरा है फुना है सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप एक पर्टिकुलर स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज एनिमल कंजर्वेशन दिस इज एनिमल कंजर्वेशन आप लोगों ने लियोन मेसी का नाम सुना होगा मेसी ग्रेट फुटबॉलर है ना उसका घर BSR के अंदर आता है BSR के अंदर आता है नो फ्लाइंग जोन है उसका घर के घर से कोई कमर्शियल जहाज नहीं जा सकता है अब आपके आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे BSR मींस कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी कोई एरोप्लेन नहीं जाएगा वहां से अब तिब्बत को क्यों अलाउड नहीं गए तिब्बत को पूरे तिब्बत को चाइना ने BSR कर दिया अब अगर BSR हो गया तो उसके जो एयर है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है आपको तो उसके अंदर कोई एरोप्लेन एक्टिविटी नहीं होगी कोई फ्लाइंग एक्टिविटी नहीं होगी दैट्स वाई तिब्बत के अंदर अलाउड नहीं है और ये पूरा वर्ल्ड करता है ये यूनेस्को फाइनल करता है ये इंडिया में 12 प्लेसेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने BSR अलाउड कर रखा है वहां से कभी कोई एरोप्लेन नहीं जाएगा ठीक है उसके एवरी काइंड ऑफ पार्ट्स को प्रिजर्व करना है कंजर्व करना है और एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए उसके सिर्फ वेजिटेशन को उसे नेशनल पार्क बोल दिया गया नेशनल पार्क से आप जा सकते हैं वहां नॉन जो अबायोटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें एक्टिविटी हो सकती है यहां तो लिविंग और नॉन लिविंग सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम ठीक है एक ऐसा पार्ट एक ऐसा जिसमें देखो 3 चीजें हैं अब जब पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म हो गई किसी उस पर्टिकुलर स्पीसीज के और उसके वेजिटेशन के लिए तो नेशनल पार्क आ गए और सबके लिए चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो उसके लिए क्या आ गया
बीएसआर आ गया। इंडिया हैव 18 बीएसआर। आपके बीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसे। दिस इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, द मेन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सेकेंड नेशनल पार्क, इससे इकोसिस्टम, ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्राइवेट एजेंसीज कंट्रोल करती हैं। देन राइट डाउन। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। यस सर। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर जो मेन पार्ट पर आएंगे। नेशनल पार्क, वी हैव 106 नेशनल पार्क। और फर्स्ट नेशनल पार्क in 1936, that is Heli National Park. That is Heli National Park in UK, Uttarakhand. But इसे after in 1976, in 1976, ठीक है, इस पार्क को चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया इसका जिम कॉर्बेट। यू नो अबाउट जिम कॉर्बेट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, उत्तराखंड। और आजकल इसे रामगंगा नेशनल पार्क बोलते हैं प्रेजेंट में। आफ्टर 20 ये 1967, सॉरी 1976। नाउ प्रेजेंट रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट एक ह्यूमन बीइंग था और उन्होंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया, दैट्स वाई उनका नाम आया। अनफॉर्चुनेटली 1974 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अच्छा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। लार्जेस्ट या हाईएस्ट नेशनल पार्क, लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क। राइट डाउन। मैं आपको ये सब नेशनल पार्क डिजाइन करा दूंगा, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास। हेमिस नेशनल पार्क, ले लद्दाख। हेमिस, HEMIS, हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख। एरिया 3550 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, which one? In Andaman Nicobar, southern point of island, southern point of island, Andaman Nicobar. Latest national park, एरिया, चलो एरिया बताता हूँ। राइट डाउन। लेटेस्ट नेशनल पार्क,
Just 1 second. तो थोड़ा सा चेंज करो, नेशनल पार्क 109, तो ये 109 हो गए, 106 नहीं है, ये थोड़ा डाउट था मेरे को। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 56572, 572। 2023 का सर्वे है, 109 नेशनल पार्क्स। गूगल से इसके डाटा को सर्च कर लेना, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट। In 2021, in Assam, there are 2 national parks. In 2021, sir. Ding Patkai National Park, Raimona National Park in Assam. ये लेटेस्ट है सर, स्मॉल इज 5 किलोमीटर, और स्मॉलेस्ट है 1.4 स्क्वायर किलोमीटर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा, 1.4 स्क्वायर किलोमीटर। और इससे भी कम है इन केरला, पम्बम नेशनल पार्क, 1.3 स्क्वायर किलोमीटर। और इससे भी छोटा है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, 0.9 स्क्वायर किलोमीटर। इससे भी छोटा है फॉसिल नेशनल पार्क इन एमपी, पर इन केरला, 0.3 स्क्वायर किलोमीटर। तो इससे आप इस डिस्टेंस में नहीं जाना आपको, ठीक है, तो बहुत वेरिएशंस आपको मिलेंगे। तो नेशनल पार्क को मैं क्लास में आप लोगों को मेंशन करा दूंगा। वैसे आप लोगों को जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस सिटी के अंदर, किस स्टेट के अंदर कितना नेशनल पार्क, ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को मैंने एक पर्टिकुलर आइडिया आप लोग को दे दिया है, ठीक है। राइट डाउन अबाउट नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क, no rights are allowed. In national park, no rights are allowed. No grazing, no rights are allowed, full stop. No grazing, no firewood collection, no firewood collection
is allowed in it, is allowed in it, is allowed in it, and no settlement is allowed in it, and no settlement is allowed in the core area of the national park, in the core area of the national park. National park is the protection of both plant and animals. Is the protection of plant and animals. There are 109 national park in India. Nine national park in India. Next one is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. Write down. In wildlife sanctuary, grazing and wildlife sanctuary, grazing and firewood collection by tribals are allowed. ट्राइबल्स कौन है? जो वहीं रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए अलाउड है. आप नहीं जा सकते कि चलिए हम चलते हैं, आप नहीं जा सकते ऐसे. ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, अभी फॉरेस्ट एक्ट आया है 1 अप्रैल 2023. आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, तो उसको जरूर रीड आउट करिएगा. अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको शेयर करवा देता हूँ अभी मैम को दे करके आपको, आपके ग्रुप में. ठीक है, उसको जरूर रीड आउट करिएगा. नेक्स्ट वन इज settlement is not allowed in wildlife sanctuaries. Settlement is not allowed in wildlife sanctuaries. In wildlife sanctuaries. Next point, it is for the protection of wild animals. It is for the protection of wild animals. Wild animals. Forest Conservation Amendment Bill 2023. ठीक है, ये अभी बिल आया है, इसको मैंने मैम को शेयर कर दिया. सूरज सर को भी कर दिया. और हाँ, वो आपको ग्रुप में डाल देंगे ना. नेक्स्ट वन इज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज hunting and fishing activities are banned, oblique strictly controlled. Hunting or fishing activities are banned, oblique strictly controlled. It is maintained by private agencies or state government. It is maintained by
maintained by private agencies and state government. There are 572 wildlife sanctuaries in India. Wildlife sanctuaries in India. Wildlife sanctuary can be declared, next point, wildlife sanctuary can be declared even for one endangered species, even for one endangered species. Next and last point of wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary can be promoted to national park. To national park. And next is, write down, next is protected forest. नेक्स्ट हेडिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपको मेंशन कराया था ना मैंने. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट, protected forest are those forests in which hunting and grazing activities are allowed to communities residing in such areas. जो सिर्फ वहां रह रहे हैं वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट. Reserve forest are those forests. Reserve forest are those forests in which hunting and grazing activities are banned and can be allowed in some situations. In some situations. In some situations. A most important point, write down, eco sensitive zone. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का लास्ट पॉइंट है. इको सेंसिटिव, राइट डाउन, इको सेंसिटिव जोन, ESZ. ESZ, इको सेंसिटिव जोन. नाम से क्लियर हो गया होगा, है ना. राइट डाउन, इको सेंसिटिव जोन या इको सेंसिटिव एरियाज as per National Wildlife Action Plan, National Wildlife Action Plan, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था सर और 2031 तक चलेगा. ये 2017 से स्टार्ट हुआ, 2031 तक ये चलेगा. आर रीजंस
located within 10 kilometer are regions located within 10 kilometers of protected areas such as national parks and wildlife sanctuaries. Eco-sensitive zone, also known as ecological fragile zone. Ecological fragile zone means you can say that a very critical zone. Write down. Eco-sensitive zones are notified. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नोट करा रहा हूं बच्चा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो. आर नोटिफाइड एंड रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आपको पूरा रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिलेगा आपको. अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं इसी में, अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, purpose, write down purpose, to create shock absorber, SHO, to create shock absorber to prevent ecological damage, caused by developmental activities in such areas and protect them by minimizing the negative impact on ecosystem. Minimizing the negative impact on the ecosystem. They also act as transition zone. A transition zone from areas act as a transition zone from areas that require high protection to those that need lesser protection. यानी उनको आइडेंटिफाई करना कि इनको हैवी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इनको लीस्ट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट वन इज इको सेंसिटिव जोन विल मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लेशन. इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ will minimize
minimize forest depletion and man animal conflict and man animal conflict. अब एक कॉमन लाइन लिखना है, पॉइंट्स में नहीं. कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट सर, कॉन्फ्लिक्ट. as a general principle as a general principle the width of eco-sensitive area could go up to 10 kilometer around the protected area. 10 kilometer around the protected area. However, if these sensitive and ecologically important corridors span beyond 10 kilometer. Span beyond 10 kilometer. Then the width of the eco-sensitive zone, and type of regulation may vary, vary from area to area. वैसे उसकी विड्थ रखी गई है 10 किलोमीटर, बट एरिया टू एरिया वेरी कर सकता है. ठीक है. This is the chapter of biodiverse conservation. Then next chapter is, which one is next chapter? Which chapter? Conservation in India. Okay. So let's start. Some important rules. This is 5th or 6th chapter, 8th chapter या 7th chapter? 9th chapter. Conservation efforts, and write down heading of this chapter. Conservation efforts, legislation and rules and regulation in India. Regulation in India. ठीक है सर.
ये 9th चैप्टर है, टोटल 17 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो चैप्टर आएंगे वो ज्यादा बड़े नहीं हैं, बट आपके पीटी के लिए, आपको पीटी देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। कब कब कौन सा कंजर्वेशन एफर्ट हुआ इंडिया में अभी तक? अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था इन 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपसे। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980, और उसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है इन 2023, वो मैंने अभी आपको शेयर किया जो, ठीक है, वो इसी का पार्ट है। देखो अब ये क्लियर होगा ना, तो वो पूरा एक्ट, वो पूरा अमेंडमेंट क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन 2022। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट इन 2006, और नेक्स्ट और एंड लास्ट दैट इज CAMPA एक्ट, CAMPA एक्ट इन 2016। सर अब आपको एक बात पता है कि इंडिया में नेशनल, हाँ देखिए सर, एक बात आपको पता है कि जो नेशनल पार्क है उनको इंडियन गवर्नमेंट कंजर्व करती है, बट कौन से एक्ट के थ्रू? देयर इज नो आइडिया। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? ये 1980, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रूल था, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? अब इससे क्या होगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। So that's why we will start about the conservation effort, legislation, and rules and rule regulation in India. That's why we will start. A most important chapter for you. Write down. Write down Wildlife Protection Act in 1972. Wildlife Protection Act 1972. WPA, the short form of Wildlife Protection Act. Write down, this is the first enactments. This is the first enactments activities in India. अच्छा, इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज हुई हैं इसी के थ्रू। एलिफेंट, राइट डाउन, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979, और वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट इन 1987। ये इसी के अंडर आए हैं सर, ठीक है। राइट डाउन, टू प्रिवेंट, इसका फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट
hunting as a popular hunting as a popular sport, 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 wildlife protection act 1972 was put into प्लेस। अब देखिए कोई भी एक्ट होगा सर, कोई भी एक्ट होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो होगा ना। तो ये जो एक्ट है ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आप लोगों ने कुछ दिन पहले सलमान खान का केस सुना होगा, सलमान खान पर यही एक्ट तो था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इस एक्ट के? राइट डाउन अ न्यू हेडिंग। मैं आपको वन बाय वन हर वो चीज मेंशन करा दूंगा, और अपने नोट्स को जाकर के देखो, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, अपने नोट्स को जाकर के मुखर्जी नगर के, करोल बाग के किसी भी कोचिंग से आप मैच कर लेना। आप लोग रियलाइज करेंगे कि जो हमारे पास कंटेंट है, जो हम लोगों ने रिटर्न किया है, वो एग्जाम के लिए एकदम से परफेक्ट है। वन बाय वन। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वाइल्ड लाइफ। फिर यहां दो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस फॉर द वाइल्ड लाइफ। दो आर्टिकल, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A, 48A एंड 51A। फोर्टी एट ए क्या है? वेरी गुड सर, वेरी गुड। नहीं, उसके लिए तो है ये, बट क्या है इसके अंदर, क्या एक्सप्लेन किया है? तो राइट डाउन, नो इशू, राइट डाउन सर, राइट डाउन। डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट, the state to protect and improve the environment and improve the environment and the safeguard wildlife and forest। ये आर्टिकल 48 कहता है, ठीक है। इसको 42 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1972 में। राइट डाउन, आर्टिकल वाज एडेड टू बी, आर्टिकल वाज एडेड टू बी, article was added to be constitution by the 42nd amendment in 1976, amendment in 1976। और 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट डाउन, imposes certain fundamental duties for the people of India, imposes certain fundamental duties for the people of India। ठीक है,
अब ये था क्या सर? ये तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब इसके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। WPA passed, WPA न्यू हेडिंग न्यू पॉइंट, WPA passed, हाँ नहीं आर्टिकल 51 नहीं है, आर्टिकल 51 तो ड्यूटीज का है, तो ये आपकी भी और मेरी भी ड्यूटी बनती है। एवरी ये ड्यूटी पीपल ऑफ इंडिया जो भी है सबकी ड्यूटी बनती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सलमान खान ने क्या किया था? यही तो कर दिया, ये आर्टिकल 51 तोड़ दिया। आर्टिकल 51A उसको ब्रेक किया गया तो उसको पनिशमेंट हुई, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक ब्लैक डियर पर अब भी केस चल रहा है। वो केस था ना, वो ड्राइवर से वो ड्रिंक करके और वो ड्राइव किया था और वो कुछ लोग मार दिए थे, वो तो हो चुका है। लेकिन अब वो ब्लैक डियर यहाँ राजस्थान के अंदर, और बिश्नोई मानते हैं ना उसको, ज्यादा मानते हैं बिश्नोई। हाँ, दैट्स वाई बिश्नोई जो ये कौन बिश्नोई है जो, हाँ इसने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा है, मारने को बोला है सलमान खान को। यही तो केस, और क्या है। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड ऑन अगस्त 21, 1972, अगस्त 21, 1972 was, sorry, but was later implemented on September 9, 1972, on September 9, 1972. This act prohibits the capturing, this act prohibit the capturing, killing, poisoning or trapping of wild animals. Next one is objective of WPA. Objectives of WPA. Write down first point, prohibiting of hunting. First point, prohibiting on hunting. Next point, protection and management of wildlife habitats. Protection and management of wildlife habitats. Next one is establishment of protected areas. Establishment of protected areas. Establishment of protected areas. Fourth, regulation and control. Fourth point, regulation and control of trade in parts and products derived from wildlife. Parts and products derived from wildlife. Management of zoos.
मैनेजमेंट ऑफ जू, नहीं नहीं नहीं, ये सब ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ WPA के। मैनेजमेंट ऑफ जू, जू जू, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर ऑफ WPA, नेक्स्ट हेडिंग, फीचर ऑफ WPA। राइट डाउन, फीचर ऑफ WPA। देखो एक चीज और समझिए, अगर कोई भी एक्ट आए, किसी भी एक्ट से रिलेट अगर क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको 6 एक्ट हैं जो मैं आपको मेंशन करूंगा, लेकिन सबके अंदर वाइल्ड लाइफ एक्ट का, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रोल होगा। आप मेंस लिख रहे हो, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और जो भी एक्ट आप लोग रिटर्न करेंगे, जो भी लेजिस्लेशन रिटर्न करेंगे, जो भी कंजर्वेशन रिटर्न करेंगे, जो भी रूल रेगुलेशन रिटर्न करेंगे, उसमें WPA का कोई भी पार्ट अगर आप मेंशन करेंगे ना, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को कनेक्ट करना आता है। आप कभी भी देखिएगा, आपके पेपर को कब पढ़ेगा एग्जामिनर, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बिल्कुल जो आपसे पूछा गया ना, सिर्फ वही बात आपके सामने रखें, वो आपसे जरूर डिस्कस करेगा। ठीक है, तो राइट डाउन, फीचर ऑफ WPA है ना, यही हेडिंग है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ अ लिस्टेड, protection of a listed, protection of a listed species of animals, species of animals, birds and plants, plants full stop, establishment, फुल स्टॉप नहीं, पॉइंट नहीं, फुल स्टॉप डाल के लिखो, establishment of a network of ecological या ecologically important protected areas in the country, areas in the country. Next point, section 65, section 65 of Wildlife Protection Act, section 65 of Wildlife Protection Act provide rights of scheduled tribes to be protected. It extend to the whole of the India, to the whole of the India. It has 6 schedules. It has 6 schedules which are gives varying degrees of protection, varying degrees of protection. Next point, for the first time a comprehensive list, for the first time a comprehensive list of the endangered wildlife, list
of the endangered wildlife of the country was prepared. Wildlife of the country was prepared. ठीक है सर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनको प्रिपेयर किया गया, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज थी अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, जितने भी ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल ट्राइबल्स हैं जितने भी, चाहे वो झारखंड में अभी रह रहे हैं जैसे, है ना, कुछ लोग हैं जो जंगल को छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहे, वहीं रह रहे हैं, तो उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए कि आप ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जाकर के कोई यूज नहीं करेगा। इसलिए तो हंटिंग रोक दी गई ना, कि बाहर से कोई हंटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसी का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 65 है, उसके अंदर ये साफ साफ रिटर्न है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे लिए ये आ गया पीटी के लिए, कौन सा, सेक्शन 65। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अच्छा इसके अंदर अब तक 3 अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 1972 से ये आज तक यही चल रहा है, इसके अंदर 3 अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट 1991, अमेंडमेंट 2002, अमेंडमेंट 2006। अच्छा, उस अमेंडमेंट में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो कोई ना कोई चीज या तो इन्वॉल्व की गई होगी या रिमूव की गई होगी, यस और नो। तो राइट डाउन अमेंडमेंट टू द एक्ट, अमेंडमेंट टू द एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट या फर्स्ट अमेंडमेंट 1991, फर्स्ट अमेंडमेंट 1991। introduced a chapter titled introduced a chapter titled protection of specific plant, protection of specific plant, full stop, prohibits the extraction, prohibits the extraction and sale of specific या specified and sale of specified plants for reserve forest, for reserve forest। ठीक है, अब जो सेकंड मूवी आएगी पुष्पा 2, उसमें 1991 आ चुका है, पुष्पा 1 थी 1991 से पहले की, किसी स्पेसिफिक प्लांट से रिलेट कोई पार्ट नहीं था, एनिमल से रिलेट तो था बट किसी स्पेसिफिक प्लांट से रिलेट नहीं था। अब चंदन को क्या कर दिया गया, जो लाल चंदन है उसको 1991 के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ला दिया गया। अब पुष्पा 2 के अंदर देखिएगा उसके ऊपर अटैक होगा, आपको एडवांस में बता दिया मैंने, आप जब भी मूवी देखने जाएं आराम से ऐसे बड़े स्क्रीन पर देख रहे हो तो कहेंगे ये एक्ट लग गया, इस वजह से हो गया, तो आपके साथ में जो लोग बैठे हैं उनको लगेगा भाई वाह पढ़े लिखे बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और लिखें, क्या है, लिखें द एक्ट ज्वाइंटली रेफर्स टू नेशनल पार्क, कोमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and closed areas as protected areas, protected areas। And next one is wildlife protection amendment 2022, second amendment, this is the first amendment, now second amendment।
यानी फर्स्ट अमेंडमेंट में एक प्रोटेक्शन स्पेसिफाइड प्लांट, कौन सा? 2022। दिस अमेंडमेंट एक्ट set up the National Board for Wildlife, NBWL, and State Board for Wildlife, and State Board for Wildlife, and State Board for Wildlife, and describing members, powers and functions, and describing its members, powers and functions. ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट नंबर 3 2006 में हुआ, राइट डाउन। थर्ड अमेंडमेंट WPA अमेंडमेंट 2006 भी उसे बोला गया, यानी बोर्ड को डिजाइन किया, मेंबर्स को डिजाइन किया, क्या उनकी पावर है, क्या उनके फंक्शंस है, ये सेकंड में कर दिए। समझ में आ रहा है ना? थर्ड लिखे, नंबर थर्ड, इट इंट्रोड्यूस्ड विद अ सेकंड तो 2002 हो गया, थर्ड ओके सॉरी ओके 2002 then 2006 then 2000 sorry slip of tongue, then 2006, third is world wildlife protection act amendment 2006, ये नोट डाउन किया होगा, है ना? राइट डाउन, it introduced with a view to increase the protection of tigers, अब सर ये बात देखिए, जैसे अभी सर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आएंगे, टाइगर रिजर्व है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आएगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आएगा ये तो नहीं आइडिया, बट नाउ आप लोग क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वन बाय वन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्या लिखा? टाइगर इंट्रोड्यूस्ड, फुल स्टॉप डाल के, इंट्रोड्यूस्ड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इंट्रोड्यूस्ड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज, full stop, formation of tiger and other endangered species, crime control bureau, ठीक है सर। अब बताइए स्केड्यूल कितने थे? देयर आर 6 स्केड्यूल, है ना? अब वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब टाइगर का आपको पता तो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, हाँ चेंज किया गया, वो चेंज नोट करेंगे हम। प्लांट आ गया, मैं आपको 6 लिखवा रहा हूं इसी बात के लिए।
जो भी चीजें आपको आप देखेंगे ना, आप ये कहेंगे हाँ ये 4 दिन पहले पढ़ा था, ये 10 दिन पहले पढ़ा था, ये 1 महीने पहले पढ़ा था, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो पूरी करंट के साथ कनेक्ट होकर के चलती है, डेली अपडेट होकर के चलती है। ठीक है, राइट डाउन। देयर आर 6 schedule which give varying degree of protection, varying degree of protections. Schedule 1 and part 2 of schedule 2. Schedule 1 and part 2 of schedule 2 provide absolute protection, and offense under these are prescribed the highest penalties. Under these are prescribed higher penalties. Now one by one, schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5, schedule we will discuss about. So write down. Okay, time is over. No issue. In next class we will discuss about all type of schedules, all acts. Done? So thank you so much. आज फिर से मेरे को झेला आप लोगों ने, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।